Hello everyone, I am Saksham Sharma, founder of CareerKunj and former HR and recruiter of TCS. Hence, we are consistently updating students about their queries on TCS Ignite and Smart Hiring. In this video, I will answer all the comments that we have got in the last video that we uploaded on 16 July. If you have any more comments, you can let us know in the comment section. And one acknowledgement, if there are any comments about joining date. So as I have been telling this in my videos, that joining cannot be said with certainty when it will come. It usually comes in the month of this quarter, July, August, September, but sometimes it get delayed also. So it cannot be said with certainty. You have to wait and watch. Next. ऑल राइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द कमेंट्स. सर 8 जुलाई को इंटरव्यू था, आपके हिसाब से कितना टाइम लगेगा? जुलाई एंड तो आराम से लगेगा. जुलाई की इंटरव्यूज अभी चल रहे हैं, सो जब तक इंटरव्यूज नहीं हो जाते हैं रिजल्ट्स नहीं आएगा. सो वेट एंड वॉच टिल जुलाई एंड. अगस्त भी आ सकता है, बट जुलाई एंड तक आई एम होपिंग कि हो जाएगा. नेक्स्ट, सर मैंने जुलाई 8 को इंटरव्यू दिया था, बट आई हैव नॉट गेट अ फ्रॉम टीसीएस. माय नेक्स्ट स्टेप फॉर द इश्यूज एंड सबमिटेबल्स आर समवेयर. थैंक यू. फीचर नहीं दिख रहा है तो रिजेक्ट हो गए, बट माय इंटरव्यू वाज गोइंग वेरी गुड. आई हैव एक्सपीरियंस इन इंटरव्यू एंड आई आल्सो सबमिट टू expect so much. Please, I think if your interview was good, you will definitely get selected. Don't just get anxious by what people are sharing on YouTube, because those are not credible sources. If your interview was good, it is not announced. Whenever result will come, I am sure you will definitely get selected, and this is enough for you to not to worry, because result is not announced, and if your interview was good, definitely you will get the offer. नेक्स्ट, सर मार्कशीट कैसे अपलोड करनी है? वहाँ पर बैकलॉग भी मेंशन किया है. मेरा बैकलॉग था, बट उसके भी मार्कशीट का वो भी अपलोड करना है. हाँ, सो बेसिकली यू हैव टू अपलोड 2 डॉक्यूमेंट्स. फर्स्ट अटेम्प्ट मार्कशीट जिसमें बैकलॉग था, और सेकेंड वाली मार्कशीट जिसमें बैकलॉग क्लियर किया था. सो दिस इज हाउ यू हैव टू अपलोड दैट. ओके, या sir, in my name TCS application Yashu Kumar upon my normal accounts upon Yashu Kumar creates the problem solution for it. ऐसा होता है, थोड़ा सेकंड नेम कहीं पे आगे होता है, कहीं पे पीछे होता है. तो अनलेस एंड अनटिल समबडी रेज अ इशू ऑन दिस कि दे व्हाई इट इज लाइक दैट, ये नहीं चलेगा, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम इन इंडिया. So you can wait and watch. If somebody puts an objection on this, then submit an affidavit. That's okay. So till then, just don't take any tension. Next, sir, in TCS conduct their smart hiring again in month of October for 25 pass out batch. Depends upon the number of requirements. अगर होती है तो they will do, but 25 batch next October में 26 batch का आएगा. So chances less है, but हो सकता है कि वो फिर से करें. Sir, when should I meet birth affidavit after joining receipt or now? I think कभी भी बनवा सकते हैं आप. It will be made in one day. ज्वाइनिंग भी आपका 25 डेज तो सॉरी 2 वीक्स पहले आता है. ज्वाइनिंग 2 वीक्स पहले तक आपको इंटीमेशन आ जाता है. सो यू कैन मेक इट एनी टाइम. दैट्स ओके. Sir, I was interviewed for Ignite. In the technical, I was asked to implement encapsulation, but I get confused correctly. And then he asked how to connect API with server, which I haven't implemented in my project. So I said I didn't implement in my project, and he asked to code and asked question related to expression and his answer. आई थिंक होना चाहिए, बिकॉज इग्नाइट कैंडिडेट से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होती है. तो आई थिंक सिलेक्शन होना चाहिए. मे बी अगर आपको इग्नाइट नहीं दे तो स्मार्ट दे, बट आपने एनकैप्सुलेशन वाला अच्छे से बताया है, सॉरी एक्सेप्शन हैंडलिंग वाला, तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर यू टू गेट सिलेक्टेड. नेक्स्ट, okay, same. Are you planning to master and send us not planning to master? हमेशा ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि we will go for masters because TCS also gives this opportunity. You should say your priority is job. ठीक है, तो ठीक आंसर आपने दिया, बट इससे अच्छा आंसर ये हो सकता था कि सर नाउ जॉब इज माई प्रायोरिटी, सो आई विल डू जॉब, एंड बिकॉज आफ्टर मास्टर्स ऑल्सो आई हैव टू डू द जॉब, सो व्हाई नॉट टू स्टार्ट इट नाउ. Okay, so that could be a good answer which you should give, but otherwise okay, no problem. This answer is also fair.
सर विच वन इज़ बेटर, TCS इग्नाइट और इन्फो सिस्टम एसोसिएट? दोनों लगभग एक जैसे हैं। आई वुड रिकमेंड जिसके पहले आपको ज्वाइनिंग आ जाए उसमें आप चले जाइए, ठीक है। और आई थिंक TCS इग्नाइट में आपके पास कुछ फ़ायदे हैं, दैट यू हैव यू नो अपॉर्चुनिटी टू MCA। इन्फोसिस सिस्टम एसोसिएट में वो है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट आप ऐसा भी कर सकते हैं जैसे मैंने बोला, जिसकी पहली ज्वाइनिंग आए वहाँ ज्वाइन कर दीजिए, एंड आफ्टर दैट यू कैन स्विच, बिकॉज you once you get experience you become demanded in the market, so you can change as well. So both the companies are good, so कोई सा भी आप करेंगे I think it will be the same thing. कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जिसकी भी ज्वाइनिंग पहले आती है I think you can go for that. Sir, I have a question regarding smart joining over the type of rejection, assignment, promotion, reporting 1 or 2 years in TCS salary hike. See, देखिए every year you get a hike, and what hike you get will depend upon your uh, performance. Your manager will do the performance. Typically 6 to 8% तक हाइक मिलता है, एंड देन इसके अलावा विंग्स प्रोग्राम्स भी होते हैं जिसमें असेसमेंट क्लियर करने पे ज़्यादा हाइक मिलता है। विंग्स 1, ओके, विंग्स 1 एलिवेट प्रोग्राम, एंड देन आपका डेजिग्नेशन इनिशियली क्या बोलते हैं, डेजिग्नेशन इज वन थिंग एंड रोल इज वन थिंग। सो स्मार्ट हायरिंग को जो रोल्स मिलता है, दे आर मेनली सपोर्ट रोल्स वेर इन दे सपोर्ट सम इंटरनल प्रोजेक्ट्स। अगर लेकिन ऐसा फिक्स नहीं है, इफ़ यू नो सम मतलब विद टाइम इफ यू वांट टू मूव इनटू सम अदर रोल्स, if you have a good skill set then you can also move that, okay। So but smart इसलिए भी अच्छा है because it is in TCS, and then it will give you start to your career. If you start from your career, definitely you want to do something later, like maybe switching the company or switching the role, so that you can come to the mainstream of IT where the pay scale is high, but to start with it is good. Next. Hi sir, it's been a month since I've accepted the smart offer letter and submitted the BGC a month before. Old portal, the new portal showing isn't showing the BGC. Should do. It's not. This issues are happening because of the new update in the next step portal. Please wait for some time. आपने कर दिया था तो it should come back to the same status. That is what I think. And if it doesn't come after waiting, then you can again upload it. But I think it will come back to the same status, okay, like last time. If you have any details which is getting asked and you can fill it like ILP section, then you can do that. Now I'm completing AWS certification university. Certification certificate ऐसे कुछ फर्क पड़ेगा क्या, क्योंकि मैं सर्टिफिकेट में जा रहा हूँ, आ चुका है। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट इज़ जस्ट फॉर योर लर्निंग, इट विल हेल्प यू इन द इंटरव्यूज दैट यू गिव टुमारो। AWS के प्रोजेक्ट्स आप ले सकते हो आफ्टर जॉइनिंग TCS, बट उससे ज़्यादा आपका पैकेज वगैरह नहीं बढ़ेगा कुछ। सर माई इंटरव्यू वाज हेल्ड ऑन 5th July रिगार्डिंग रिजल्ट्स इज नॉट अनाउंस, सो अभी तो कोई रिप्लाई नहीं आएगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आई थिंक till July end or August के first second week तक it should come. All right, so I think we have covered all the comments. Thank you so much.